बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन 34 है टॉफल सीरीज़ का फॉर द बिगनर्स। आज हम इसमें यूज्ड टू के फ्रेज़ को यूज़ करना सीखेंगे। इसके ग्रामर्स को अच्छी तरीके से इन डेप्थ स्टडी करेंगे ताकि हमें क्लैरिटी हो कि हमने यूज्ड टू को कैसे इस्तेमाल करना है। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द लेसन। Used to in the usage the expression used to means the same as would। जैसे हम पहले स्टडी कर चुके हैं would को, so used to would के एक्सप्रेशन में in terms of meaning कोई डिफरेंस नहीं है, however grammatically they are different। इसके अलावा used to का जब आप verbs यूज़ करेंगे तो आप कभी भी इसको विदाउट ed यूज़ करके used to नहीं लिखेंगे, it has to be used to whatsoever। although हमें sound sometime spoken language में used to लगता है, but that word actually is used to। There are two grammar rules when it comes to the application of used to, so let's start those words, those grammar rules। So bear in mind कि आपने notice करना है कि इन grammar rules में difference क्या है। As per grammar rule, the first rule is कि आपके पास subject के पास जब आप used to लिखेंगे, so that will be followed by a verb in the simple form and no other things। और ऐसे में जब आप ये इस कंडीशन में आप अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आप कोई पास्ट टाइम हैबिट बता रहे हैं। इसको हम एग्जांपल में समझते हैं। When David was young, he used to swim once a day। This is the word used to followed by a verb in simple form and that is showing कि ये डेविड की पास्ट टाइम हैबिट थी। And no more no less, इसमें आप सिंपल आपको जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपकी पास्ट टाइम हैबिट को रेफर कर रहा है। हाउएवर एज पर सेकंड रूल विच सेज कि आपने सब्जेक्ट के बाद बी या गेट के एडिशनल दो वर्ड आपके पास होंगे। अब अगेन ये पेरेंथेसिस में है तो इधर बी होगा या गेट होगा, विच विल बी फॉलोड बाय द वर्ड मॉडल वर्ब यूज टू, दैट विल बी फॉलोड बाय द वर्ब इन इट्स ING फॉर्म जिसे हम जीरन फॉर्म भी कहते हैं। सो ऐसे में जब हम ये वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे तो व्हाट डज दैट मीन। सो हम पहले बी की एग्जाम्पल लेते हैं। जॉन इज, दिस वर्ड इज एक्चुअली बी फॉलोड बाय दिस फ्रेज यूज टू। ऐसे इसके बाद जब वर्ब आ रहा है दैट इज इन द ING और जीरन फॉर्म विच इज स्विमिंग। सो द सेंटेंस इज जॉन इज यूज्ड टू स्विमिंग एवरी डे। नाउ दिस सपोजिटली इज गोइंग टू बी, अब वी आर रेफरिंग कि ये जॉन की अकस्टम्ड है टू हैव दिस स्विमिंग हैबिट एवरी डे। सो दिस इज व्हाट जॉन इज सपोजिटली डूइंग एवरी डे दैट ही स्विम्स, सो ही इज अकस्टम्ड टू हैव दिस हैबिट। सो जब आपने इस तरह की कोई हैबिट बतानी है तो आप सिंपल इज़ को यूज़ करेंगे, यानी कि आप वर्ब बी यूज़ करेंगे विच विल बी फॉलोड बाय यूज टू। और ऐसे में जब आपके सेंटेंस में वर्ब होगा दैट विल बी इन इट कंटिन्यूअस फॉर्म। हाउएवर जब आप वर्ड गेट इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक जॉन गॉट यूज टू स्विमिंग एवरी डे, सो अगेन रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सेम वेयर यू हैव यूज टू फॉलोड बाय वर्ब विद ING फॉर्मेट। So but here what does that mean? That John was not supposedly doing it since day one. He became accustomed to have this habit of swimming every day. So जब आप कोई हैबिट को with time progressively acquire करें तो आपने word get का इस्तेमाल करना है या got का इस्तेमाल करना है depending on the tense। लेकिन but अगर आपके पास जो आपके पास शुरू से हैबिट आपकी चली आ रही है विच यू स्टिल होल्ड ऑन, तो आपने वर्ब बी इस्तेमाल करना है विद वर्ड यूज टू फॉलोड बाय वर्ब विच इज़ इन द ING फॉर्मेट। The word the things to notice is that जब आपके पास बी के साथ यूज टू है तो that means to something you are already accustomed to, ये आपकी रेगुलर हैबिट है। बट गेट यूज टू मीन्स दैट यू इवेंचुअली बिकम accustomed to। सो जो आप क्लैरिटी के साथ अगर हैबिट आपकी शुरू से है तो आपने बी यूज टू यूज़ करना है, लेकिन अगर आपने इवेंचुअली अपने प्रोग्रेसिवली इसको एक्वायर किया है, यू बिकम समथिंग इन प्रैक्टिस ऑफ सच थिंग, तो दैट इसमें आपने गेट यूज टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। इसको फर्दर क्लियर करते हैं विद सम एग्जांपल्स। द प्रोग्राम डायरेक्टर यूज टू राइट हिज ओन लेटर्स। अगर आप इसको फोकस से देखें तो इसमें हमारे पास कोई बी मौजूद नहीं है, कोई गेट मौजूद नहीं है। दिस इज जस्ट प्लेन यूज टू फॉलोड बाय सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, सो दिस इज पास्ट टाइम हैबिट। सो द प्रोग्राम डायरेक्टर previously supposedly write to his own letters. Second example says George is used to eating at 7 p.m. So this is something George is accustomed all his life that he eats his meal, rightly so dinner, at 7 p.m. We got used to cooking our own food when we had to live alone. So again इसमें आपके पास got की phrase के साथ used to है और this followed by a verb which is in ING or gerund form. So that is something that it was not something he used to do all his life. He eventually become accustomed to it because he got a chance or he had to live by himself. So as a result he acquired this characteristic to cook his own food. तो जो चीज़ आपके पास शुरू से है आपके पास है आपकी हैबिट दैट विल बी विद बी वर्ब के साथ यूज टू, एंड समथिंग यू एक्वायर प्रोग्रेसिवली विथ टाइम दैट विल बी गेट यूज टू।
Further more examples, we say first Mary was used to driving to school. Again, he is accustomed to, he's always been driving himself to school, so regardless, it doesn't matter. Second example, the government used to restrict these pills. This is simple past tense habit, maybe they not necessarily need to do it any further. And final example is the man is used to reading his newspapers in the morning, that eventually for some odd reasons or whatever reason maybe he became accustomed. He is accustomed for maybe for from his parents side or something, he has always been like that. He used to read newspapers in the morning, in his morning ritual of this guy. So something, again a quick recap, agar aap koi cheez aapki past time habit hai, that will be straight used to followed by simple form of verb. Second, agar aap koi habit jo aapke paas shuru se chali aa rahi hai, that will be verb be followed by used to followed by verb in the gerund or continuous form. And anything that you eventually adapted, which you then it will be follow, it will be like got or get followed by used to and then verb in again in ing or gerund form. This was all about used to. अब हम इस एक्सरसाइज में डायरेक्टली dig in करते हैं. इस स्लाइड पर आप काइंडली अपना वीडियो पॉज करें और इन 10 ब्लैंक्स को फिल करें. आपको हर ब्लैंक के साथ एक पैरेंथेसिस में वर्ब नज़र आ रहा है. डिपेंडिंग कि आपका सेंटेंस का क्या सब कॉन्टेक्स्ट है, आप इनको फिल करें. दे कैन बी ईदर सिंपल फॉर्म, दे कैन बी कंटिन्यूस फॉर्म. सो अकॉर्डिंगली जो भी आपने भी 3 रूल्स देखे हैं यूज टू के, उनको आप इस पर अप्लाई करेंगे. और फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी डन विद एन एक्सरसाइज, हम उनके लिए आंसर्स पे जंप करते हैं और देखते हैं आपने कितने का आंसर्स ठीक किए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आई वाज यूज्ड टू फॉलोड बाय ब्लैंक विच इज़ ईट एट नून व्हेन आई स्टार्टेड स्कूल. सो दिस इज समथिंग ही इवेंचुअली this is I was, so this is actually be verb. So be के बाद जब भी आपके पास used to होगा, that will be followed by a verb which is ing. So that was I used to, because since always at noon का time था, तो he was practicing this all his life. The second example is he used to eat dinner at 5 o'clock. Again, it's a simple past time habit. Maybe he is not stick to that habit anymore in his life. The question number 3, when I was young, I used to swim every day. So this was something he has left and he's not practicing anymore. He past time habit. So simple आपके पास simple form of verb होगी. और आप ये क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस यूज टू इज वन फ्रेज, दिस टू हैज़ नथिंग टू डू विद द वर्ब. ये आपका इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म नहीं, इट्स अ सिंपल वर्ब फॉर्म. दिस यूज टू इज इट्स इन इटसेल्फ अ कंप्लीट मॉडल हियर. क्वेश्चन 4, ही यूज टू लाइक हर बट ही डजंट एनीमोर. Past time habit, he has moved on for some odd reasons, maybe have got another one, so it's just a simple verb form. Question 5, don't worry, someday you will get used to speaking. Again आपके पास get phrase है, so that has to be verb in ing form anyways. Question 6, Alvaro can't you get used to. Get जब आपके पास आएगा तो used to के बाद जो आपकी verb form होगी, that will be in the continuous gerund form anyways. The question 7, he used to. Again ये past time habit है, तो you will be have without for the second thought, ये simple verb form है. So he used to dance every night, but now he has studies. So he's something past time habit, he has done with it. Question 8, Adam is used to sleeping late on weekends. This is आपकी verb be followed by used to, so the verb will be in the ing form. Question number 9, Chiku is used to eating American food now. It's a continuous habit, he is accustomed to it, and this is verb be followed by used to, so the verb will be in the gerund or ing or continuous format. The final question, she finally got used to. This is something she eventually become like this, so the verb will be in ing form. She finally got used to eating our food. This was all about used to. I hope this all makes sense. If you like the video, kindly subscribe, like and share with your friends.